Hello learners, we are starting with the basic concepts of microeconomics from this particular video lecture. हम जब start कर रहे हैं basic concepts of what macroeconomics. See, macroeconomics is part of class 12 CBSE. So मेरा ये video lecture will be focusing only on the curriculum of 12 CBSE. Let us just start with the today's educational video. See, the basic concepts of macroeconomics, first and foremost, you will understand the branches of economics. Basically, how many branches of economics are there? आपने अभी class 11th में microeconomics को study कर ही लिया होगा. Now you are going to face macroeconomics. So you are already knowing that there are two branches of economics. One is microeconomics and second is macroeconomics. In class 12, as you have already been knowing that इस बार आपको macroeconomics और IB पढ़ना है. So let us start with first that what is the basic meaning of macroeconomics. So, see, scope of economics, it has already been told that it has been bifurcated into micro as well as it has been bifurcated into macroeconomics, which are the two scopes. Now, अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे आपने पढ़ लिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वी हैव बेसिकली थ्री कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जिसके अंदर आपने कंजम्पशन पढ़ा होगा. यू हैव हर्ड अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यू हैव हर्ड अबाउट लॉ ऑफ डिमांड इन दैट. देन थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर में आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा. यू हैव हर्ड अबाउट द सप्लाई. These all are the concepts of microeconomics. Okay. And in pricing of goods आपने पढ़ा होगा market equilibrium. Now in macroeconomics what you will study basically in this year, macroeconomics start with first, that is theory of income and employment. Under this you will be able to understand aggregate demand and aggregate supply, national income concepts and various things. Next is theory of general price level inflation. इसमें आप ये समझोगे what is the meaning of inflation, what is the meaning of deflation, what is excess demand, what is deficit demand. And there are other basic concepts of macroeconomics such as government budget, balance of payment. These all are the concepts of macroeconomics because they are affecting the economy as a whole. वो सिंगल पे अफेक्ट नहीं कर रहे. सिंपल एग्जांपल, टेक द एग्जांपल जैसे आपके सामने है जीएसटी. Now here it is a macro factor. Suppose simply GST, goods and service tax, recently introduced here. It is affecting everyone, not only one person. It is affecting the every person in the economy. Similarly, GST, उसके बाद आपके पास demonetization, the concept. When particularly what? The notes of 500 and 1000 were being banned. That were not a legal tender. उसके बाद आपके पास बहुत सारे concepts हैं. Unemployment, poverty. See, these are the problems which are not affecting a single person. That's why these are the concepts जिसको हम बोला जाता है macroeconomic concepts. Microeconomic concepts are affecting the individual persons, individual consumer, individual producer. These are your microeconomic concepts. अपन ने detail पढ़ लिया है. And when I have told you, just see my YouTube channel. Microeconomics lectures have been uploaded. You can see out what is the basic of your microeconomics. Now, in this particular lecture, let us be confined with the basic concepts of macroeconomics. See, first and foremost, what the lecture says is the microeconomics meaning. Let us understand first the microeconomics meaning and then we will understand macro. First, microeconomics is only focusing on individual parts. I already told you कि microeconomics हमेशा किस पे focus होगा? Individual पे ही. जैसे a household, a firm, they have to make decision on how they have to interact with these specific markets. So always microeconomics is being focused on individual producer, individual consumer. But what about macroeconomics? Macroeconomics, I already told you that it is focusing on economy as a whole. Now let us understand when it got emerged. कब से macro concepts आना शुरू हुए? Micro concepts were very easy, but macro concepts, when it emerged, it was from the Great Depression of, particularly you can see. First,
Macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book, that is General Theory of Employment, Interest and Money. That's why macroeconomics का दूसरा नाम है Theory of Income and Employment. Okay, the Great Depression of 1929 and the subsequent years saw the output and the employment levels in the countries of Europe and North America fallen by a huge amount. So ये एक के साथ नहीं था, ये सबके साथ जैसे अभी कोरोना वायरस इज बीन देयर, इट्स अ मैक्रो कॉन्सेप्ट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एवरी portion of the world. So that is not a one concept or a micro concept, that is a macro concept. Means it has affected the lifestyle, it has affected the economies all over the world. Similarly was Great Depression, and there this founder economist Johnson applied the Keynesian view. If you have heard many a times, the Keynesian view was the only thing that gave the macroeconomics concept, because he saw that that Great Depression has not affected a single person, it has affected the overall economy. उसने सारी इकोनॉमी को अफेक्ट करा, उसने एक पर्सन को अफेक्ट नहीं करा. जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन 1929 में सर्च आउट ऑन दैट व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन, यू विल बी एबल टू नो कि रिसेशन कैसे आया था. अभी भी कोरोना वायरस के अंदर रिसेशन ही चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, output is going down. So this is the impact that macroeconomics is not affecting only one person, it is affecting the overall economy as a whole. So that is, and we have already known कि कब economics आया, it has been started 1929, but जो book publish हुई थी वो 1936 पे publish हुई थी by Mr. John Maynard. Now, moving further, from this, the subject of macroeconomics was born. Now, what is macroeconomics? Macroeconomics is study of economy as a whole, which deals with aggregates such as national income, aggregate demand, general price level, and overall total employment in the economy. तो यहाँ से आपके macro concepts थोड़े आप समझोगे. First is problem of full employment. क्या सब एम्प्लॉयड हैं? देयर इज सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सेम इज इन अदर कंट्रीज आल्सो. कुछ हद तक कम है इन डेवलप्ड कंट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आर लो, बट इट इज एग्जिस्टिंग. ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, it is the problem of other nations also. Then is distribution of income, where the income has been distributed fairly or not. That is the major task. Then is balance of payment. When I will go on this particular chapters, we'll be able to understand what is balance of payment. It is very much related with the import and export of goods and services. Okay, next. Particularly, if you can see the next slide, that is the difference between micro and macro concepts. First, microeconomics, I already told you. What is the purpose of microeconomics is to determine the price and output of an individual firm in market. इसलिए इसको बोला जाता है theory of price भी. Microeconomics is also be known as theory of price. Macroeconomics, on the other hand, is dealing with the aggregate of total output and employment. That's why it is also known as theory of income and employment. Getting that? अब aim क्या है microeconomics का? Aim है microeconomics का price determination, market equilibrium. Then here, that is macroeconomics, that is central problem of macroeconomics is determination of level of income and employment. I already told you these are the very much specific names of your micro and macro. Micro is also known as theory of price, macro is known as theory of income and employment. Now, what tools are being utilized in micro and what tools are being utilized in macro? Micro involves simple demand and supply tools, but coming to macroeconomics, you have to see aggregate demand and aggregate supply. इसमें पूरा एक chapter है, that is theory of income and employment. We will be going on in the upcoming videos. Example of microeconomics is individual demand, individual supply, individual market price. Coming to macroeconomic is aggregate demand and national income and unemployment, poverty. Abhi this coronavirus impact. So this is not impacted only me. This has impacted the overall economy. So
ऐसी कोई भी चीज जो ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है ओवरऑल great level, that will be known as a macro concept. But if it is affecting only an individual, if it is affecting only one person, that will be known as a microeconomic concept. That is individual demand, per capita income, etc. Okay. Basically, इसमें मैंने microeconomics के अंदर और differences point पे बात करा है. There are dependencies. See, micro is dependent on macro, and macro is also dependent on micro. That is a very grateful statement that micro and macro are interdependent. Yes, it's true. Microeconomics dependent रहता है macro पे और macro भी dependent रहता है macro पे. That is a very general statement that how micro and macro are related. Macro are related for certain kinds. Now, how to check the economic performance? चलो simple. अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे पता करोगे कि economy is growing or not? You have already studied in class 10th also and 9th also. Word is GDP, that is gross domestic product. अब ये GDP निकालते कैसे हैं? आप ये सब समझोगे in the upcoming lectures when we will go for the national income. How to calculate the national income? What are the methods? So GDP is what? चलो इस word को आपने बहुत बार सुना है. That GDP, gross domestic product. Now today I will make you understand what is the meaning of GDP. But before going on the meaning, let us see who are the world's top GDP leaders. First is USA, second is China, third is Japan. भैया अपनी कंट्री कहाँ है? आएगी वो भी आएगी. Fourth is Germany, and fifth is your India. India is also in the top 20 leaders for GDP. India's economy is having good amount of GDP. ऐसा नहीं कि इंडिया के पास अच्छा खासा जीडीपी नहीं. Sixth is your Britain. You should be proud that India is above Britain. Seventh is Brazil. Eighth is your Italy. Ninth is Russia. And these are the top leaders for GDP. And here comes the India, but on fifth position, and USA is on first position. That is the major drawback. अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया का जीडीपी जो है ट्रिलियंस में इट इज 2.9 ट्रिलियंस यूएस डॉलर एंड वहीं यूएसए का जीडीपी देखें सो इट इज 20 ट्रिलियंस यूएसए डॉलर. So there is a major gap, 10%, or I can say particularly here it is 20. तो 10% अगर उसका नियर अबाउट करूँ तो 2%. तो जितनी यूएसए की जीडीपी है उसका नियर अबाउट अपनी इंडिया की जीडीपी. सो वी हैव टू गो फार अवे स्टिल. अपनी जीडीपी इंक्रीज करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सी जीडीपी बनता है किससे? गुड्स एंड सर्विसेज से. तो जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उतना ज्यादा जीडीपी आपके सामने आएगा. नाउ meaning, let us understand what is the meaning of GDP. See, focus कि आपने बचपन में पढ़ा that GDP is what? GDP is the value of all final goods and services produced by the productive enterprise in domestic territory. भैया ये एक डेफिनेशन के अंदर बहुत सी चीजें हैं. इसके अंदर फाइनल गुड्स है, सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्टिव एंटरप्राइज क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ड्यूरिंग अन ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल. इस पे डिटेल डिस्कशन विल बी देयर इन द अपकमिंग लेक्चर्स. बट सिंपल डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आए हैं. जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय productive enterprises in the domestic territory of a country during a year. Up, let us understand these value of final goods and services and particularly what is explanation. See, first and foremost इसके अकॉर्डिंग हम कौन से लेंगे? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ली जाती. हमको क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग लेक्चर. सेकंड इज that it has to include only currently produced goods and services जो इस साल प्रोड्यूस हुए हैं. जो अगले साल या पिछले साल प्रोड्यूस हुए वो currently we will not see. जो इस साल अभी अभी प्रोड्यूस हुए हैं I have to see that term period.
Take for the example that is from 1st April to 31st March फाइनेंशियल। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोड्यूस हुए हैं आई विल कंसीडर इट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जैसे अभी सेशन खत्म हो गया, ईयर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर इज एंडेड ऑन 31st मार्च 20, तो 1st अप्रैल 2019 से लेके 31st मार्च 2020 तक जितना भी प्रोडक्शन होगा वो असेस किया जाएगा एंड दैट डाटा विल बी पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दैट विल बी नोन एज द जीडीपी फॉर 1920। ठीक है। एंड लास्ट, इट हैज टू बी प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। पहली चीज याद रखना, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस नहीं करा तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, मतलब वर्ड के साथ एसोसिएट करो, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। So domestic means that has to be produced within the domestic territory limits. अब domestic territory क्या होता है? That is again very much basic concepts which will you understand if you see the next upcoming lectures. Now moving on to the explanation. See again अगर हमने ये बता दिया कि क्या क्या इंक्लूड होता है तो ये भी तो बताओ कि क्या क्या एक्सक्लूड होगा, मतलब किस किस को हम नहीं इंक्लूड करेंगे इन जीडीपी। दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। जैसे आप ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हो, कैपिटल गेन्स को एक्सक्लूड करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मींस को आप एक्सक्लूड करते हो। सिंपल, एक पर्सन किसी ने चोरी से इनकम कमाई तो क्या उसको आप जीडीपी में इंक्लूड करोगे क्या? Think simple, that if the person is earning income from illegal sources, that is not a part of GDP at all. It has to be legal source. Second, transfer payments. Transfer payments क्या होती हैं? Factor payments क्या होती हैं? You will be able to understand and you will continuously watch this upcoming lectures. Transfer payment simply बता दूं जिसमें कोई goods and services का यूज नहीं है। सिंपल, एक फॉर द एग्जांपल, अगर आप अभी इंडिया में हो और अगर एज अ सन यू आर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू दुबई टू योर पेरेंट्स, तो ये दुबई में आप अपने पेरेंट्स को एज एन इनकम दे रहे हो, दुबई में जो आपकी इधर जा रही है दैट विल बी अ ट्रांसफर पेमेंट। सिमिलरली सोचो, अब यहाँ पे कोई पेरेंट्स रह रहे हैं और उनका बच्चा दुबई में रह रहा है और दुबई से उनको पेमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं, तो जो दुबई से पेमेंट the particular son is sending to the parents, that is transfer payments, उसने कोई goods and services employed नहीं। transfer payments never include the goods and services. Simple, transfer payments are not to be included, not in domestic income also, not in your national income also. That is the major task. Okay, after the particularly these things जो हमको exclude नहीं करने, जैसे capital gains, capital gains होते हैं आपकी property पे, मे बी सपोज योर असेट यू आर सेलिंग आउट। सो ये जो कैपिटल गेन्स हैं इनको हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज वर्ड क्या है? जीडीपी, प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, वी आर कंफाइंड विद गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट विद एनी अदर एल्स। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू, सो ये आपके पास तीन इमेजेस यहाँ पे सामने हैं। कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं होती है, इलीगल इनकम इंक्लूड नहीं होती है और ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं किए जाते। जीडीपी हमेशा हम निकालते हैं करंट प्राइस पे। अब करंट और बेस प्राइस पे भी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, वी विल बी सीइंग इन माय अपकमिंग लेक्चर। दिस वाज द बेसिक लेक्चर, होप you are able to understand this particular. Do follow my YouTube channel for the further updates for macroeconomics, microeconomics and Indian economy. Do press the bell icon also so that you can get the updation as soon as possible. Thank you for listening up this lecture. I hope this lecture has helped you.